अस्सलाम वालेकुम। हाँ शफकत भाई, आज पानी डाल दूंगा ना, मैं अभी एक जीपीएस खाली कर रहा हूँ। हाँ तो उसके बाद लेकर के आता हूँ। भाई यहाँ से जो पानी ले जाना है ना, ये हम अपनी गाड़ी को पहले फांसी देते हैं। ये देखो आप रास्ता देखते जाना, पूरा रास्ता कि हम कैसे लेकर के जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी मौत का सवाल है इधर हमारा। Nazir Ahmed is one of hundreds of water tanker drivers in Karachi, Pakistan. Here, people don't have consistent access to running water, so drivers like Nazir must get it to them. Cities all over the world are running out of water. Sao Paulo, Chennai, Cape Town, a problem that's going to get worse as climate change intensifies and infrastructure fails. Because Karachi doesn't have a river running through it, it's had to pipe all its water in from over 70 kilometers away. And as Karachi's population has grown, so has its size. This meant water needed to get to more people in an ever more sprawling city. Today, Karachi has grown so big so fast that it can only supply half the water the city needs. Karachi's in line to become the third most populated city in the world by 2030. Right now, there isn't any neighborhood that doesn't have water shortages. But in Karachi's District West, one of the city's poorest neighborhoods, almost 40% of residents don't receive any running water at all. छोटा गिलास रखती हूँ कूलर पे ताकि बड़ा गिलास बच्चे भरते हैं, 2 घूंट पीते हैं, फेंक देते हैं, इसीलिए छोटा गिलास इस्तेमाल करती हूँ कि छोटे गिलास में पानी कम आएगा, बस बच्चे पिएंगे, फेंकना नहीं पड़ेगा, गिलास खाली। बिल्कुल नहीं मिलता इस इलाके को, तो ऐसे जैसे उसने कसम खा रखी है पानी देने वाले ने कि इस इलाके में पानी देना ही नहीं, या छोड़ना ही नहीं। कभी बोलते हैं हेडिंग में पानी नहीं है, कभी बोलते हैं पीछे से डैम खाली है, पानी नहीं है, तो कहाँ से पानी दें? तो ये बता के यहाँ से बस चुप करा देते हैं, तो इसीलिए टैंकर डलवाना पड़ता है। In Sarvari's home, everyone can only use about 11 gallons of water per day. That's less than 4 toilet flushes or 1 5-minute shower in the United States. पानी पहले वाला तो सही है ना? हाँ पहले वाला खाली है चाचा, टंकी मेरा धो के रखा हुआ। ये टैंकर डलवाने के दूसरे दिन ही फिक्र शुरू हो जाती है। हमारा भी दिल करता है नल खोले, नल खोल के बैठे हैं आराम से, बच्चे भी नहाएं। बेसन लगाने का दिल करता है, सिस्टम सब है बेसन का, पानी की तंगी की वजह से नहीं लगाते कि इसलिए जग से धोएगा बच्चा थोड़ा सा पानी और नाले पूरा खोल का खड़ा रहा, भी पता चले टैंकर शाम को खत्म। औरत जा जो घर गृहस्थी चलाती है उसको पूछ के देखो कि कैसे घर चलता है। चक्कर का बंदा ऐसे सोता है, इससे अच्छा तो मर जा। Until recently, Karachi's water crisis gave organized crime an excuse to steal water and then sell it via the tankers. Illegally tapping water lines made the city's existing shortage even worse. The government says they've cracked down on the tanker mafia, but many Karachiites continue to blame drivers like Nazir for the city's lack of water. इस कारोबार में अब रहा कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम बदनाम है, समझे ना। ये कुछ मजदूरी है हमारी और ये कहते हैं माफिया माफिया माफिया, पता नहीं माफिया कहाँ का, ये समझ में नहीं आज तक आया। हाँ ना, बचता तो कुछ भी नहीं है। और 12 लाख की मेरी गाड़ी है, और गाड़ी मैंने कैसे बनाई है, किस्तों की मेरी गाड़ी है, अभी तक इसके पैसे दे रहा हूँ, और मकान मेरा किराए का है। और इसमें अगर कमाई होती तो मैं 18 साल से ये काम कर रहा हूँ, अपना घर ही बना लेता, एक छत बन जाती। Karachi's old infrastructure loses about 1/3 of its daily water just piping it into the city. Just think about that. When every drop of water matters so much to so many people, it's hard to imagine that 30 to 40% is being wasted simply because of pipe cracks and leaks.
some of that water also gets stolen. People who don't get water tap into lines and take it for their own homes. Amer Alamgir is an environmental scientist at the University of Karachi who's been researching Karachi's water for the past 10 years. He knows that the city's current water problems are a combination of municipal mismanagement, industrial pollution, and infrastructure problems. He's also convinced that these water problems are only going to get worse. पाकिस्तान के जिस इलाके को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़तरा रहा है वो सिंध का प्रोविंस है, ख़ास तौर पे कराची शहर। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का कराची शहर में पिछले 5 सालों में इजाफा हो चुका है। बारिशों का पैटर्न मज़ीद कम हो गया है, इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया। Here's an example of how deadly these problems can be. In 2015, Karachi experienced a massive heat wave. The city struggled to provide people with enough water. Over 1,000 people died over the course of 2 to 3 days. In the years since, the city has not done anything to resolve these problems. Scientists like Amer predict that more events like this will happen and more people will die. आने वाली जनरेशन में मुझे ये लगता है कि कुछ लोग गंदा पानी पीने की वजह से मरेंगे और कुछ लोग पानी ना पीने की वजह से जो है वो मौत का शिकार होंगे। कि हमें अपनी न्यू जनरेशन को वाटर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर स्कार्सिटी के बारे में सीरियसली हमें उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। Improving awareness of the water crisis in Karachi may be an important first step, but even people who are aware of the problem also know that this system just isn't working for them. Those who can't afford to drill on their own property for groundwater. Imagine living in a major city and having to drill a well just to take a shower. लास्ट टाइम हम लोग के जो पानी आया था, जो लाइन से आया था, वो तकरीबन 3 महीने पहले आया होगा। तो इसलिए हम लोग को नीड पड़ी थी इस बोरिंग की, जो कि हम लोगों ने 3 साल पहले करवाई थी एंड अब हम इसको गहरा करवा रहे हैं। हमारी यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था जो हमने पहले बोरिंग की हुई थी घर में, और वो ऑलमोस्ट 80 फीट पे थी। बाकी घर भी मौजूद है, उनमें भी सेम इशू है कि वाटर बोर्ड की लाइनों में तो पानी नहीं आ रहा है। तो जब वो भी गहरी बोरिंग करवा लेते हैं 300 प्लस, तो देन वाटर की कंडीशन ऐसी होती है कि उस तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू कर देता है जहाँ गहरी बोरिंग होती है। तो ये लाइक का कंपटीशन है कि हम जितना भी करेंगे तो वो, लेकिन वो अल्टीमेटली सबका नुकसान है। फिर हम लोग 500 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वाटर लेवल जनरली डाउन जाता जाएगा जितना हम नीचे जाते रहेंगे। मुझे डेफिनेटली बहुत बुरा फील होता है एंड आई नो कि हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। आगे शायद 10 ईयर्स का बाद हम लोग को बहुत मसला हो। Karachi is currently using up groundwater at a faster rate than it can replenish it. Think of this like a bank account. Essentially, the city is withdrawing money and spending it without depositing enough back in. Groundwater supplies used to be enough to support a thriving agricultural industry around Karachi. But as more people have tapped wells, that resource is drying up, and produce prices have spiked. Ehsan, who works with a company called Aqua Agro, developed a system to help farmers reduce their water usage. But he also represents a core tension in Karachi. He's trying to help solve water issues, but at the same time, the city is designed so unsustainably and water scarcity is so rampant, it's hard for him not to contribute to the problem. So while he's had to drill even deeper at his own home, Ehsan wants to make sure he can help farmers conserve their water. इस वक्त हम लोग कराची के इलाके गडाप टाउन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे पानी की सूरत हाल काफ़ी सीरियस है। ज़्यादातर कुएँ हैं वो खुश्क हो चुके हैं। बोरिंग के पानी के लिए कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऑलमोस्ट 600 to 800 फीट के ऊपर पानी अवेलेबल है, लेकिन उसको निकालना फिर एक मुश्किल प्रोसेस है। जो पानी इस फार्म पे यूज़ होता है वो पानी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है। वो पानी भी इवन बोरिंग का ही है, लेकिन वहाँ पे लेवल फिर भी निस्बतन बेहतर है। आपके पास वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, साथ में गर्मी भी बढ़ रही है, तो दोनों तरह से जो फार्मर के लिए हैं वो प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ पिछले इतने सालों से। और देन डेफिनेटली सब ग्राउंड वाटर की तरफ गए, तो एक साथ अगर हर सब कोई चाह रहे हैं कि हमारे पास पानी आ जाए ग्राउंड वाटर का, तो उसका लेवल भी जो है वो बहुत डाउन होता जा रहा है।
एक्वा एग्रो नाम का ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली ज़मीन की सूरत हाल को और मौसम की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा होता है कंटिन्यूसली 24/7। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो एक फ़ैसला करती है डिवाइस डेली कि आज यहाँ पानी की ज़रूरत है या नहीं है, या अगर है तो कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लाइक 20% हम लोगों ने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करी है, लेकिन जो पानी हमने डिक्रीज़ किया या बचाया वो तकरीबन 50% है अराउंड। ये कोई मेरा मसला नहीं है, दुनिया में हर बंदे का मसला है। अगर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैं इस तरह के कॉज के लिए काम कर रहा हूँ जिसमें हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है, पूरी दुनिया का फ़ायदा है। Aqua Agro is one small-scale solution to Karachi's water crisis. But to truly move the needle, the city will have to make investments in fixing infrastructure and start cleaning up corruption. That's the only way for people like Serveri to get the water they need. कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म होगी, पता नहीं इतने का है भी या नहीं। सोचते सोचते इंतज़ार करते करते कभी सहूलत होगी, कभी होगी। Doha Debates brings together innovators, activists, and students to find solutions to urgent global issues. To learn more, check out our debate on the global water crisis that was held in Cape Town, South Africa, or watch our explainer on the water wars of the future.